पैसे लेते हैं ये हमारे हुकूक टैक्सेशन के। And if my provincial government, my provincial assembly does not even have the right to tax its own people, that will be decided in Islamabad. What is the message that you're giving us? I'll give you that is the political aspect of it. Mr. Speaker, sir, in my constituency, पिछले 2.5 साल में आज सिर्फ 45 लाख रुपए के एक चारसद्दा के एक सेनेटर के फंड पे काम हो रहा है, लेकिन उसी हल्के में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में से आज भी 1 करोड़ रुपए का काम हो रहा है मेरे हल्के में। कल सरदार साहब आए यहां बैठे, मैंने उन्हें कहा जनाब स्पीकर, now the total revenue generated by the local council board in my province was 916.8 million in a year. वो कहते हैं कि ये हम फेडरल गवर्नमेंट आपको देगी। जनाब स्पीकर, किसी के बारे में प्रोडिक्ट तो तभी इंसान कर सकता है जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड तुम देख। परसों आपने भी अखबार में पढ़ा होगा जनाब स्पीकर, मेरे सूबे का वजीर आला जो मुस्लिम लीगी है वो उठ के चिल्लाता है कि आज भी वापदा के जिम्मे मेरे सूबे के पैसे हैं। वो पैसे जनाब स्पीकर जो आईन ने मुझे दिए हैं, वो आईन ने दिए हुए पैसे तो मैं मरकजी हुकूमत से नहीं ले पा रहा, और ये मुझे ये हुकूमत देगी। किसके साथ ये मजाक किया जा रहा है जनाब स्पीकर? क्या मजाक हम कर रहे हैं? For God's sake, you've got to be very careful. You've got to be very careful in taking decisions. The mood in the smaller provinces, Mr. Chairman, is not the mood that it was in 1995 or 1996. यहां पंजाब के जो मेंबर्स बैठे हैं, पंजाब के जो लोग हैं, मैं बड़ी अदब से मिन्नत करता हूं उन सबके जनाब स्पीकर कि खुदारा एक तबका लगा हुआ है ये इंप्रेशन देने कि पंजाब पाकिस्तान है और पाकिस्तान पंजाब है, एंड इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द फ्यूचर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब वापडा की बात चली जनाब स्पीकर, मुझे तो बारहा यह कहा जाता है कि वापडा बैंकक्रप्ट है, वापडा तुम्हारी सूबे के पैसे तुम्हें नहीं देता। नाउ आई वुड लाइक द अटेंशन ऑफ द सेक्रेटरी फाइनेंस। वो ही वापडा जनाब स्पीकर जो मुझे कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं कि मैं तुम्हें दूं, उसी वापडा के पैसों में से 38 करोड़ रुपए मेरे वजीर वापडा ने सिर्फ अपने हल्के में एज डिस्क्रिशनरी फंड लगाए। We've got proof of it. किसी को वो कागजात चाहिए, we've got them. 38 crore rupees as discretionary fund from one ministry. मैं कहां जाऊं जनाब स्पीकर? वापडा कंगाल ना हो तो क्या हो? यहां सर लेबर वेलफेयर के फंड से पिंडी के एक हल्के में 14 करोड़ रुपए की लागत आई है। वो फंड सिर्फ और सिर्फ एक हल्के में गए हैं। क्यों ये बाकी मेंबर जो यहां बैठे हैं ये मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस कौम के नुमाइंदे हैं कि नहीं है? फिर हमें कहते हैं कि फर्क है दोनों में। एक तो मैं बड़े अदब से जनाब चेयरमैन ये इन्हें कह दूं, 2.5 साल काफी अरसा है, आज भी उठ के कहते थे कि वो जो पुरानी हुकूमत है उसके ये असरात है। यार 2.5 साल is more than enough. Half your period is over. Now at least show your own what you're doing, not the effect of the ex-government. कोई ऐसी आवाज जो तुम्हारी मुखालिफत में उठती है, कोशिश तुम्हारी है कि तुम उसको दबा दो। Now that in no way is good governance, Mr. Chairman. या तो शायद मेरी अंग्रेजी इतनी कमजोर हो कि गुड गवर्नेंस मैं ना समझ पाऊं। Then I'd like them to explain as to what good governance is. And the problem, Mr. Speaker, sir, is they tarnish their image every time. जंग और द न्यूज को ये टक्कर गए। हर रोज जब हम अखबार उठाते थे एक नया मसला था, जंग और न्यूज का, जंग और न्यूज। 2 हफ्ते 3 हफ्ते कुछ और अखबारों में नहीं था। जब उन्होंने टेप्स निकाली
एहतसाब रहमान की, तो दे वेंट बैक ऑन इट। नजम सेठी को उठा के क्या क्या ड्रामे नहीं हुए कि आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है, आईएसआई के हवाले है। आखिर में क्या बना? खूब हल्ला गुल्ला करके अपने लिए एक दाग पैदा करके आखिर में गवर्नमेंट उठ के सुप्रीम कोर्ट में कहती है जी वी विड्रॉन आवर केस, देयर इज नो केस अगेंस्ट नजम सेठी। कैन एनीवन इन देयर गेट अप एंड कन्विंस मी कि इस पूरे एपिसोड में गवर्नमेंट की कोई नेकनामी हुई? आई विश, आई लिटरली सर, आई रियली विश I had the Honorable Minister for Information here. अजीब बात है sir, Minister Information. I had, and I used the word in the past tense, I had a hell of a lot of respect for that person. उठ के सर वो कहता है कि मौजूदा हुकूमत जैसा प्रेस फ्रेंडली गवर्नमेंट कभी इस मुल्क में आया ही नहीं। इसके बाद जो उसने ये बात कह दी सर, तो मैं क्या कहूं। उसके बाद जनाब स्पीकर दूसरी वो जगह जहां से एक डिसेंटिंग वॉइस आ रही थी, जनाब स्पीकर, दोज वर द एनजीओज। 1941 NGOs were banned in the Punjab। और जिस तरीके से वहां के वो एक मिनिस्टर जो हैं बेनियामीन रिजवी साहब, वो जिस तरीके से गालियां दे रहे हैं उन एनजीओस को और उनको चलाने वालों को, वो जिस तरह वो जलील कर रहे हैं उन्हें, सर ह्यूमन राइट्स भी हमसे नहीं बची। The way a campaign of vilification started against Hena Jalani and Asma Jahangir, you are a witness to it and I'm a witness to it. Now why? Just because a team from the BBC came to make a film and certain people got in contact with that team. फिर तो मैं एक बात कहूं जनाब स्पीकर, if the way the government reacted to that team, you only react in that way if you're really cornered and you're really hit. If you're not really cornered, you're not really embarrassed, you will not react the way the government reacted. Now for God's sake, यही सीट थी सर, यहां मियां नवाज शरीफ बैठा करते थे पिछले असेंबली में। There are ex-members here and the press gallery here, they'll bear me out. उठ के जो प्रिंसेस एंड द फ्लेवर पे जो तकरीर मियां नवाज शरीफ ने यहां की, काश ये मुस्लिम लीग के मेंबर्स जाके जरा वो तो सुन ले। Did he condemn the BBC then for interfering in the internal affairs of Pakistan? No. You didn't. वो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, सर whatever is good for the goose is good for the gander. उसके बाद जनाब स्पीकर, आज यह मसला यहां फिर कई दिन से मेरे ये दोस्त कोशिश कर रहे हैं कि मसला आसिफ जरदारी साहब को उठाएं। If a man has done something wrong, the government has every right to produce him before a court of law. But no government, no decent government will ever say that instead of producing the man before a court of law, I will take him to a lockup, hand him over to the police, and let the police treat him as they want to treat him. So we've been through that process, and we know how it feels. For God's sake, don't do this. Aaj uth ke Janab Speaker, you may have seen the picture of the senator in the papers. मैंने तो उस दिन मुशाहिदा से यही कहा, उसमें सर जो कट आया है उसकी जुबान पे, that is vertical, it is not horizontal, ऊपर से नीचे आया। मैंने जैसी वो तस्वीर देखी जनाब स्पीकर, आधे घंटे मैं कोशिश करता रहा, and the cut is absolutely in the center of the tongue, straight line.
मैं आधे घंटे कोशिश करता रहा कि अपनी जुबान को अपनी इस मुंह में किसी ऐसे तरीके से कर दूं कि सेंटर पे मैं ऐसे करके काटूं अपनी जुबान। It is not humanly possible to cut your tongue the way Zardari's tongue was cut. You can't do it yourself. One point that I would really like to convey is this cycle of being in power and going into opposition. This is a cycle. They've seen it. One party was in power in 88. They came into power in 90. Then they came into power in 93, and now they again came into power in 97. They should only do to others, Mr. Speaker sir, जो कल को अगर इनकी बारी आई तो इनमें बर्दाश्त करने का मादा उसका हो। और बदकिस्मती पाकिस्तान में ये जनाब स्पीकर कि जो तुम किसी और से करते हो वही तुम्हारे साथ नहीं होता, लेकिन वो बमाई सूद तुम्हें वापस करना पड़ता। That is all I'd like to tell you. Another sign of good governance, Mr. Speaker sir, is the anti-terrorism ordinance, which in itself is a ban on all political activity. पोस्टर तुम नहीं लगा सकते, वॉल जॉकिंग तुम नहीं कर सकते, नारे नहीं लगा सकते. That is not good governance. But I think they have a different dictionary, Mr. Speaker sir, to the dictionary that we have. My concept of good governance, certainly, if this is good governance, it is different. What they are saying is good governance. Extrajudicial killings is good governance. पिछले एक साल में 40 बंदे तो सिर्फ एनकाउंटर्स में पंजाब में मरे. इट्स गुड गवर्नेंस. कराची की जो हालत है वो तो रोजाना यहां ये कराची के भाई हमारे बैठे हैं, उठ के चिल्ला चिल्ला के वो चिल्ला रहे हैं. दैट इज गुड गवर्नेंस. Gagging the press is good governance. Beating up members of the opposition is good governance. Now at least do not say then that what we are doing is good governance, because by no stretch of the imagination can it be called good governance. One point that I would like to convey, another point. पिछले एक महीने में जनाब स्पीकर, different political leaders have tried to enter FATA, and one specific area of FATA. No political leader was allowed to enter, including my friend Haji Bilor Sahab. Haji Bilor Sahab को रोका, काजी हुसैन अहमद को रोका, लतीफा अफरीदी फाटा को नुमाइंदा है, उसे कहा कि तुम नहीं जा सकते. But I want to make one point very clear. By not allowing conventional political entities to enter FATA, you are creating a vacuum in FATA. And every vacuum that you create in the political field is always filled by extreme elements coming in. The vacuum will never ever be filled by moderates. For God's sake, do not create a vacuum in FATA. आप खुद सोचे मिस्टर चेयरमैन, एक बंदे के पास वोट का हक तो है, एडल्ट फ्रेंचाइज है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में वो मेंबर नहीं बन सकता. इट्स अ जोक एट डेमोक्रेसी. इट्स अ जोक एट डेमोक्रेसी. वी एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, मिस्टर स्पीकर सर, वी ऑलवेज स्टूड फॉर अ पॉलिटिकल डायलॉग टू सॉल्व पॉलिटिकल इश्यूज, एंड वी स्टिल स्टैंड देयर. One or two points that have to be clarified. Why this sudden escalation? Because you were going very smoothly with your best diplomacy. You were doing fine with your Lahore resolutions. Why this sudden escalation? And an escalation of the type, Mr. Chairman, where today even the government of Pakistan openly accepts that it has failed to get any international support.
But has the blame for not getting that international support been pinpointed? Who is responsible for it? Is it the government or is it the diplomatic corps, your foreign office? Now, this nation has the right to demand of you that they be taken into confidence on it. आज के नेशन में, अभी मैं वहां लॉबी में पढ़ रहा था, ISPR कहता है कि the USA and the West do not understand our point of view. What are they doing? What is your foreign office doing? What is the government of Pakistan doing? That even today the West, according to the ISPR, it's an ISPR press release. For God's sake, Mr. Speaker said, this is not a joke. जो इतलात हमें आ रही हैं, जनाब स्पीकर, that villages on both sides of the international border, not the line of control, villages on both sides of the international border have been vacated. Now, if the government of Pakistan tells its people to get out of the border areas, that means it accepts the fact that there is an imminent threat of war. We are not taken into confidence. The people are not taken into confidence. फिर जनाब स्पीकर, in conditions like this, it is a must that the people of the country at least unite, and they are one. कल यहां मेरे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि 65 और 71 में यही फर्क था। आज क्या होता है जनाब स्पीकर, एक दिन इस असेंबली से गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन को हम सपोर्ट करके हम तो पास कर देते हैं यूनानिमसली, लेकिन जैसे ही वो यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है, वहां से मेंबर्स उठ के वापस गालियां हमें देना शुरू कर देते हैं। उसके दूसरे दिन, no less a person than the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, he gets up and he starts abusing the opposition. What is the message that he's giving us? That it doesn't need us? No, sir. This is not an issue. The integrity of this country, the existence of this country is not the issue of the PMLN alone. It is an issue of every single citizen and every single political entity that resides in this Islamic Republic of Pakistan. Thank you very much. एक बात मैंने बड़े अदब से मिस्टर कामिल उमर साहब से करनी है जनाब स्पीकर. There are two very glaring omissions that we feel in the whole process of running the government. एक तो रिक्वेस्ट मेरी ये होगी जनाब स्पीकर कि the privatization commission should be a privatization commission of the Parliament of Pakistan. It should consist of members sitting on both sides of the aisle. Because time and again we've been told that the repayment of loans is going to take place through the proceeds of the privatization commission. तो रिक्वेस्ट मेरी गवर्नमेंट से ये होगी, do not make it an issue of just the PMLN. Take the people of this country, the different political entities represented here, take them with you. अगर आप जैसे as is claimed, if you are very clear in your mind और कोई intentions आपके नहीं है गलत, so I don't think the government should have any objection to it. In fact, I discussed it with the chairman of the Privatization Commission yesterday, and he said he did not have any objection to it. He said, the only thing is I will not be here tomorrow, otherwise with your speech I would get up and I'd support what you're saying. Thank you very much. You have one last point. Sir, एक बात मैंने सुबह डिस्कस की मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर से, which I would like to make. I am speaking with the perception of my own province in mind. The problem that we have as agriculturists is that our inputs are open to the forces of market, whereas our outputs are controlled. They're controlled by the government.
So either you control the inputs as well as the outputs, or then if you let inputs at the mercy of the marketing forces, then I hope they'll get up and they'll permit our products also to the forces of the market. Thank you for your patience, Mr. Speaker. I thank the House and I thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ji.